द लेजेंड ऑफ तुलमुल। तुलमुल कथा माज तुलमुल भगवती हंस कथा सठा प्रण दपान रामायण काल पेठ यह कथा यथ मंस अगर सिज मार्ग किनत कथा हुन शुभारंभ करो अस तेली हिमालय पेठ शुरू करुन श्रीलंका वातुन पत कशीर युन या अगर अस कशीर पेठ शुरू करो श्रीलंका गछुन गछुन तो तमि पत गछुन हिमालयस कुनत यह कथा बारसस तो अद बर अथ कथा गौड़ यह कथा यी अद समझ कथा अत सु जुड़ान महाराजनी हुंद प्रादुर्भाव कशीर मज क्योंकि यह श्रीलंका पे आमुस तो भगवती यह कुनी भगवती अम सं साधना गसान दोमिस स्वरूपस मज प्रकट कशीर मज कि श्रीलंका मज साधना हुंद स्वरूप अलग श्रीलंका हिंद राक्षस अमिस तामसी रूपस मज बूजान कशीर हिंद दीव नाग सात्विक रूपस मज खिर बावान व्यन बावान पोश बावान तो भगवती हुंद अनुग्रह प्राप्त करान दीवी हुंद अनुग्रह प्राप्त करने खतर आज सहस्त्र हर वरी हर रत हर ٲठम पे सात्विक स्वरूपस मज माज दोद रतन दी कंद बावान तो तम सुन अनुग्रह प्राप्त करा। ओम श्री महाराज्ञा भगवते नमः। तुलमुल कथा हुंद ब्याक आयाम अकिस व्यक्तित्व से जुड़ित चाहे सु स्वामी विवेकानंद हु महापुरुष आस चाहे सु स्वामी विद्याधर जी हु परम योगी चाहे महायोगी भगवान गोपीनाथ जी हु योगियन हुं योगी जीवन सब चाहे कह महापुरुष सु शायद ही कह महापुरुष उस कशीर मन जाव तो माज दीवी हंस अनुकंपा तस पे या माज दीवी कोर तिहुंद वन सोरी पोज क्या तम सारी माज दीवी हिंद यथा पुतुर युतु न कशीर मन पद सपदन वल सारी महापुरुष तो महाविदुषी ललेश्वरी रूप भवानी बे सारे सिद्धाय यम त वथ कशीर मन माज हंजी यछ सतन सपुद यह सोरे संभव कशीर मन रूद अनुग्रहुक अंबार जारी युस आज स्थापित सपदित महागायत्री स्वरूपस मज आज पुनर्विद्यमान सपुद अही सारनी तुलमुलिज भगवती करिन सारनी पे अनुग्रह सारनी रूजन स रच साहिकस रूजन सारनी सद्बुद्धि दीन सारनी यह तुलमुल कथा क्या मज आव स्वामी विवेकानंद सुन नाव दपान 1848 मज स्वामी जीन भविष्यवाणी कर्मस दपान स्वामी विवेकानंद जीन पन्न शिष्यन तम वक्त वोनमुत ज वरियो पत पज तम वक्त कन संतन भक्तन माज हिंदन महामाया भगवती हुंद पुनः आह्वान करुन तो कशीर सप्द बे जागृत येतुक सनातन सप्द बे जागृत यन तम पत युजन सु 93 वरी पतुक योग आव महापुरुषो कर स्व अमल सो क्रिया भगवती करक महागायत्री स्वरूपस मज पुनर्जागृत कशीर धरती पे तो युद्धन आज पुनः सनातनुक राज अनंत काल खतर कशीर पे बे अकि लटि साकार सपुद वन करो इस माता हिंद तुलमुल वासुक तमि ब्रोह कित पठन कर तम प्रवेश कित पठ कर तम यात्रा कत कत बीठ सो कशीर तमुक वर्णन सर्वप्रथम हनुमान जी पन्न फेकन पे दीवी वायु मार्ग किन सती देश कश्मीर मंडलस मज वातनावान उत वतित दीवी अनुसंधान करान छांडान तस आमत 360 नागपूतन किस कस जाय रोज मुफीद लायक जान रोजन लायक 5 साल पर्वत सर करथी सो विष्णुपाद जाय वातान युस खर के आकारुक विशाल सरोवर अथ नकश मंज गोन कपाल मोचनुक मुक्तिधाम मंज गोन यमन जायन अकि जम्मू माज डेर चूंकि ये तोतल कन पहाड़ी इलाक युस नागन खतर मुफीद अम किन कोर माताई ब्रोह कुन पकनुक संस ब्रोह कुन पकथी सो वातान विष्णुपाद मज द्राम से विष्णु गंगाई हंदिस इलाकस मज विष्णुपाद यानी कौंसर नाग यमि पे अहर बलुक ग्रजवुन आर नेरान यमि ब्रोह दीवी
पुलवागीश्वरी हंदिस पवित्र धामस यथ कोलगोम वनान वातान ये तरिथ वस सो दिवसर ये नदी प्रचंड सत वसान दिवसर पत सो वातान खलवर्णी यथ खन भरन तनान मनोहर जाय चपर ये सब्जार योत द्रीट ये सोरे असल मगर पून नहस बराबर ये दीवी हुन दोयुम पड़ाव ये पे द्राय दीवी ब्रोह कुन वन हेचन सो वतर दिशाई कुन फेरन ये सो मातन मटन तीर्थ किस लॉकटिस गामस लघुपुर यानी लकुटपुर वच लकुटपुर वचित ऋषिधाम यानी ऋषियन तो तपस्वियन हुंधाम यथ ऐश मुकाम वनान यथ इलाकस मज फीरित आई दीवी वापस अनंतनाग ये खोत न दीवी ताय लकुटपुर यथ आज लुक भवन वनान वज दीवी पत रायथन बदपुर कोटि तीर्थ वर्मुल चंदपुर यानी चंडगोम कंकर स्थल यानी टकर आई दीवी फीरित इतकन कोर दीवी लगभग सारे जायन हुन मोयन सरसी कश्मीर मंडलस सर तो वस शारदा तीर्थ किस पहाड़ी जाय यमि पत सो वापस सती दीश कुनत फीर ٲखरस मज वस सो सिंध जल सत आवरित इलाकस मज ये हर तरफ सेंद वसान अकिस जाय शादपुर नख व्यथ सिंध सत संगम करान अथ इलाकस नख चर दीवी अख रबदार दल दलदार जाय यस 5 स्वरपन बापत मुफीद जगदम्बा सपुज सठा खुश तो हनुमान जी समझोन इतकन भक्त प्रवर रामेष्ट वायु सूनो महाबल विरम क्षणमत्र त्वमल गर्दाश्च चोदय स्वैरम स्वैरम विसर्पत तूलवदत्र पांकिले वयं च विश्रमिष्यामः छायाद्रुमेषु भूतले। ही रामचंद्र नटाठ भक्तन में श्रेष्ठ वायु सिंध पुत्र महाबली हनुमान वन रुक कैहस कालस ये यमन म्यान जल व्यालन नागपूतन प्रेरणा जे वार वार करन तिम यथ हमस हिश नरम जाय मज पन्न यथाय रोजन शुरू यति गन तो थद छाय दार कुल वन रोजन यम यति अनंत कालस खतर यथ जाय लब्धवन लदवोन यथ लदवनिस आव मंडल नाव युस प्राप्त करुन असंभव देवी कोर ये स्थल मनोनीत ये जाय कोर देवी अनुग्रह तो लूका वोन अथ तुलमुल यानी तुल मूल्यकम ये निर्णय बूझित गई सारी भक्त जन सठा खुश वनोस भगवती तामसी रूप मनसवित सात्विक रूप तो दोरमुत मज आय वन पुनः कशीर यथ कश्मीर मंडलस महान शांत स्वरूपा बनित सात्विक मूर्ति रूप सत्व गुण युक्त दूध शकर ग्यव खीर हलव मिष्ठान भूख स्वीकारन वाजन तो 15 अक्षरन हंद मूल मंत्र सत विभूषित महारागी नाव सत जन्म हेत यथ कश्मीर मंडलस अनुग्रह करने यह अमिसी जगत अम्बाई हंद अनुग्रहुक अख स्वरूप श्री राम जीयन कोर लंका विजय संभव युत योत विभीषण जीयस बनो लंका हुंद राजपाट भक्त जनन परम सिद्धि माज हंद अनुग्रह सत प्राप्त सपदान मान्यता दपान अमि रामायण युद्ध विजय पत श्री राम जी सीता जी हेत अश्विन पूर्णिमा दोह प्रथ वरी माताई हुंद दर्शन तो पूजा करने महाराज्ञा हिंदिस दरबारस मज तुलमुलिस मज हाजिरी दिवान इथे कन अश्विन अष्टमी दो यानी दुर्गाष्टमी दो विभीषण तो मंदोदरी राज्ञा हिंदिस दरबारस मज हाजिरी दिन प्रथ वरी तुलमुल यवान तो देवी हुंद अनुग्रह प्राप्त करान यम अनुग्रह दो हालांकि देवी खतर प्रथ दो अनुग्रहुक दो तो भक्त हेकि तमिस कुन दोहन
याद करित तम सुन ध्यान करित तम सुन अनुग्रह प्राप्त करित दोहन छ पनन महिमा तो अकिस भक्तस तो तम सिंज माजि कह ति चूक कह ति क्षण महिमादार आसान दपान छना यतनी हुशारी गई तती सपुत प्रभात। ओम महारज्ञा भगवते नमः। अच्छी शरण मज अच्छी शरण अच्छी शरण अच्छी शरण अच्छी शरण शरण शरण। Some excerpts from महाराज्ञा प्रादुर्भाव के अंश महाराज्ञा प्रादुर्भाव मंज। ओम श्री महारागी प्रादुर्भाव विवरणम् भृंगीश संहितातः श्री महारागी भगवते नमः। या मूर्तिस्त्रिपुरा देव्या द्वितीया तरुणा विधा उपासिता राक्षसेन रावणेन महात्मना। ईशानकोणे लंकाया नागे अनन्ते प्रतिष्ठिता तामसी बहिरादिष्टा सा का वै वेद सत्तम। तामसी राजसी वापि सात्विकी वा महेश्वर। सैव श्रुत्वा मया देव पुण्ये काश्मीर मंडले भुवनेश समीपे तु विघ्ननाशार्थमास्थिता। कलौ सत्त्वात्मिका देवी वैष्णवी देव दुर्लभा। केन नीता कथं तत्र किं रूपा च प्रतिष्ठिता। वद सत्यं महादेव लोकानुग्रह काम्यया। श्रीभैरवः शृणु सुन्दरि वक्ष्येऽहं तरुण्याश्चरितं महत्। येन श्रवणमात्रेण जनः सर्वज्ञतामिया। राक्षसोपासिता भक्तया महिष्यैः मधुमानुषैः एवं श्यामा परा देवी राक्षसैः समुपाश्रिता। तामसी सा तु तरुणी त्रिपुरायाः परा कला। अन्ते राक्षस कर्मणा परां घृणां भजति। यदा तदपराधैः सा चोद्विग्ना तद्गृहस्थिता सती देशं समायातुं कृतव्रता सुनिश्चला। तदा याता सती देशं रामराज्य प्रदायिनी महारागी इति विख्याता भुवनेशमुपाश्रिता। नीता हनुमता देवी नागानन्तो परिस्थिता। शक्तियुतैर्नागशतैस्त्रिभिः सा परिवारिता। पाञ्चालादिं समुत्क्रम्य कपालमूलसन्निधौ वियद्विष्णुपदोपत्य कायां प्रस्तरखण्डिके। मध्यग्रामान्तरे भूमौ स्थित्वा च पुनरुत्थिता। ततः विष्णुगङ्गातीरे सानुमतीं दिव्यस्थली प्रच्छन्नवनवर्तिनीं खलवारिणीं मनोहारां। जलहीनां विलोक्य तां प्रस्थिता चोत्तरादिशां। तत्र मार्तण्डपूर्वे सा लघुपुरे स्वनूपगे दृष्टिं कृत्वा पुनर्याता शान्ता ह्यनन्तनागताः। अनन्तनागैः संवृता हनुमत्ता शिरोधृता। देवी भगवती रागी भ्रान्ता सर्वत्र मण्डले।
क्वचिल्लोकपुरारामे क्वचिद्रायस्थले शुभे क्वचिद्वादिपुरे ग्रामे कोटितीर्थे जले क्वचिच्चण्डपुराध्यक्षे क्वचित्कङ्करे तथा एवं भ्रान्त्वा शारदातः सती देशं प्रत्यागता अन्ते संगमसानिन्दे सिन्धुजलसमावृतं सर्वं प्रान्तं सजम्बालं फणीनां हितकारकम् वीक्ष्य फलप्रदानेन सोपयुक्तं इमं स्थलं प्रसन्नवदना देवी हनुमन्तम् अबोधय भक्तप्रवर रामेष्ट वायुसूनो महाबल विरमशणमत्र त्वमलगदाश्च चोदय स्वैरं स्वैरं विसर्पत् तूलवदत्र पाङ्किले वयं च विश्रमिष्यामः छायाद्रुमेषु भूतले तूलवत्तुल्यतां यत्र स्थानन्यानन्यानि सुन्दरि लघुभूतानि मूल्येन तस्मात् तूलमूल्यकम् अत्र स्थिता भूच्छान्ता सा क्षीरखण्डाज्यभोजना सात्विका सत्त्वरूपा सा देवी पञ्चदशाक्षरी अस्यास्तु भजनात् सर्वे परां सिद्धिम् उपागताः पुरा श्यामा भवेद्यातु लङ्केश भवने तदा सैवेदानीं सती देशे महारागीति विश्रुता रामराज्यप्रदा सैव तरुणी या पराकला प्रपद्य मनसानां च सद्यो मोक्षप्रदायिनी पुत्रकामा महेशानि धनं चापि धनार्थिनः विद्यार्थिनो महाविद्यां कन्यां कन्यार्थिनः प्रिये धनधान्यं पशुश्चापि गृहक्षेत्रं निरन्तरं प्रसादात् परमेशान्यः प्राप्नुवन्ति न संशयः. Bhairavi inquires that manifestation of the goddess Tripura, known as Dutiya and Taruna, was propitiated by the highly gifted Ravana, the demon. He installed her image in a pond replete with countless snakes at the northeastern quarter of Lanka. Seemingly, she, the goddess, looks like Tamasi. What is she in essence? Unfold to me, oh my lord, who art the last word on such esoteric knowledge. O great Lord, does she comprise inertia, mobility or transparence? I have heard like this in Kashmir, the land of piety, that goddess has stationed herself near the outskirts of Harmukha mountain for dispelling the impediments of the devotees. In Kali age, she is unalloyed transparent by demeanor and strictly vegetarian by profession. Even with the gods can scarce place her in essence. With the intention of doing a favor to the humanity, O God of gods, spell out candidly as to how and by whom she, the goddess, was carried there and in what form she was established in Kashmir. Bhairava replies, lend ear to me, O charming Bhairavi, I shall describe to you the telling adventures of Taruna. By mere listening to these, the devotee can attain omniscience. Since goddess got annoyed by Ravana, O Bhairavi,
that Shama acquired the single honor of being the tutelar deity of hordes of demons in the entire world. That very Shama, the towering goddess, was attended upon by these demons. The evergreen Tamasi, the sparkling deity of Tripura, in the end got suffocated there by the unwholesome acts of demons. When being stationed in Ravana's house, she felt vexed by his omissions. She made a well-considered resolve to proceed to Sati Desha, Kashmir. Having repaired to Sati Desha in the vicinity of Harmukha mountain, she ushered in the rule of law and piety, so came to be known as the Great Empress Maharagi. O Devi, mounted on the serpent king Ananta, surrounded by 360 snakes, she was carried there by Hanuman. It has been said that the periphery right from the towering Harmukha mountain, Ledu and Bhaga are unequal in their sanctity throughout the world. O Bhairavi of exquisite beauty, where the ever bountiful land is, as the soft cotton which can be had for none to exorbitant rates, has thus earned the name of Tulmulyakam, Tulmula. On having stayed here, she became calm and composed, her diet being milk, candy and clarified butter. The goddess personified in herself the all-pervading transparence and the occult incantations of 15 syllables. By dint of her propitiation, the sages obtained highest heavens. Sri Rama, through her worship alone, could put Ravana to soar. It was through her grace, O Devi, Ravana's brother Vishana, with tranquility of mind, acquired more than enough sovereignty over Lanka. Now on repairing to Sati Desha, Kashmir, came to be known as Maharagi, the mighty empress. She ushered in rule of law and piety. She is ever youthful, embracing all the digits of moon. That very Tripura, the queen, par excellence, known as Maharagi, personifying calm composure, is meditated upon by those who possess mental poise of highest magnitude. Accompanied by the Lord of Serpents, Ananta, the vehicle for blessing Sri Rama with unblurred perception. That very goddess, when worshipped, grants the desire boon. O Devi, I have unfolded all this to you, responding squarely to your queries. That Shama, in the domicile of Ravana, has earned appellation of Ragni on coming to Kashmir. By mere listening to these details in Kali age, one reaps the virtue of 10,000 sacrifices. O benevolent lady, by its mere recitation, the votary is totally absolved of worldly limitations. Thus, the first canto containing the description of Tula Mula in the context of Maharagni. Om Shri Maharagi Pradurbhav Vivaranam Atha Dvitiyah Patalah Vringish Samhitatah Shri Maharagi Bhagavate Namaha. Shri Bhairavi Dev Deva Mahadev Sarvagya Parameshwara Kripam Kuru Mahadev Vistarena Shrinomyaham Ka Devi Tripura Prokta Katham Shyama Bhavat Swayam Katham Ramena Chita Bhut Katham Prapta Sati Saram Etat Sarvam Mahadeva Kim Karasmi Tav Priya Shri Bhairavaha Shrinu Devi Pravakshyami Yat Prishtam Girije Tvaya Asyaha Shravana Matrena Sarva Vriddhi Prajayate. O omniscient Lord of Lords, I beseech you to favor me in detail as to who that goddess Tripura called as such, how she selected to become Shama, how did Sri Rama propitiate her, and how she came to Satipura, Kashmir. O my beloved, the great God, unfold all this to me, who am always at your beck and call.
श्री महाराज्ञी प्रादुर्भाव विवरणम् अथ द्वितीयः पटलः भृङ्गीश संहितातः श्री महाराज्ञी भगवत्यै नमः। श्री भैरवी देव देव महादेव सर्वज्ञ परमेश्वर कृपां कुरु महादेव विस्तरेण शृणोम्यहम्। का देवी त्रिपुरा प्रोक्ता कथं श्यामा भवत् स्वयं कथं रामेणार्चिता भूत् कथं प्राप्ता सती सरम्। एतत् सर्वं महादेव किङ्करास्मि तव प्रिय। श्रीभैरवः शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यत् पृष्टं गिरिजे त्वया अस्याः श्रवणमात्रेण सर्ववृद्धि प्रजायते। विधातृपुत्रतनयः पौलस्त्यो रावणोऽसुरः महादेव कृतां लज्जां दृष्ट्वा रुरोत्सोऽसुरः। पुलस्त्य च शिवः प्राह किमर्थं रुदति शिशुः तमुवाच मुनिः श्रीमन् लङ्कां प्रार्थयति प्रभो। प्रहस्य तं मुनिं प्राह देवदेवो वृषा कपिः शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि तत्नोजो ह्ययं शिशुः भुवनानां दुःखदायी भविष्यति न संशयः। अस्मौ दस्याम्यहं लङ्कां सुप्रियां राक्षसेश्वर आदौ तपः प्रभावेन प्रसन्नः क्रियतां विधिः तस्मात् प्राप्तवरो नित्यं लङ्कां राज्यं करिष्यति। इत्येतद्वचनं श्रुत्वा रावणो लोककर्षणः प्रहस्य चेश्वरं प्राह प्रणयानत कंदरः। देव देव महादेव शरणागत वत्सल को ब्रह्म जगतां सृष्टा तद्ध्यानमुखरीकृतः। त्वं सर्वव्यापी विश्वात्मा देव देव महेश्वर प्रपन्नं पाहि मां भक्तं कृपया परमेश्वर। यद्युक्तं परमेशान मच्छ्रेयः प्राप्तिकारणं तपो महेश्वर विभो येन ब्रह्मा प्रसीदति। इति श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य महेश्वरी लङ्कां प्राप्ता त्वया शम्भो रजेयस्त्वं भविष्यसि। महामाया हरेः सम्यक् सीतायावञ्जायते तावद्देवै मनुष्यैश्च दैत्यैर्मानवपुङ्गवैः अजेयो ह्यसि पौलस्त्य सत्यं वदामि ते। श्रीभैरवः भैरवस्त्वं महाभाग रागानामधिपो भव। यथा पूर्वं दशग्रीवस्त्वं तथा ह्यधुना भव। दैत्यानां प्रीतिमान् विप्र भव नित्यं महामते। प्राह रामं महादैत्यो रावणो घोरदर्शनः सीतां त्यज वज्रगृहं यदि जीवितुम् इच्छसि। नान्यथा त्वं बलिविधौ
उपहारं तनोम्यहं श्रीश्यामायाः पादुकायां प्राह राजीवलोचनः। भो भो दुष्टदुराचार किं व्रजां गृहं प्रति सोतां गृह्णामि श्रीश्यामा गृहीत्वा त्वां निपात्य च लङ्कां दास्यामि ते भ्रात्रे भक्ताय सुहृदाय मे। तस्मिन् वसरे देवी श्रीश्यामा रावणं प्रति प्रहस्य क्रोधतां राक्षी मेघगम्भीरया गिरा। उवाच जगतां धात्री धिक्त्वां हे राक्षसाधम् अहं व्रजामि मेद्येशे हिमाचलवरे शुभे। सती सरसि कश्मीर वैष्णव व्रतधारिणी हनुमन्तं ततः प्राह श्रीरामो मनुजाकृतिः। वीरेश वीर हनुमन् सानन्तां श्रीमहेश्वरीं गृहाण गच्छ भद्रं ते कश्मीरं प्रति शीघ्रग। एवमस्त्विति सम्पृच्छ्य वीरीशो हनुमान् तथा पृष्ठे त्वचरणौ कृत्वा सम्प्राप्तश्चोत्तरापथम्। श्रीरामो रणभूमिं स्वां जगां नगरं प्रति उवाच भ्रातरं वीरं शोहत्तोऽयं भविष्यति सीतां गृहीत्वा यस्यामोऽयोध्यां सर्वजनार्थिताम्। ततः प्रभाते सम्पन्ने रावणो भयविह्वलः रणभूमिं गतं रामं प्रोवाच वचनं शनैः। राम राम महामायी त्यजमानं च जानकी गच्छ त्वं यत्र गत्वा वै जीवितं पश्यसि ध्रुवम् न चेत् भक्ष्यसि त्वं राम युद्धं कुरु मया सह द्वन्द्वात्मिकं नान्यथैव यदि त्वं वीर उत्तमः। एवमस्त्विति रामौ वै रावणं प्रोक्तवान् स्वयं एहि युद्धं करोम्यत्र तिष्ठ त्वं समराङ्गणे। प्राप्ते नवम्यां मध्याह्ने रावणो भयकातरः प्राणान्मुमोच श्रीरामशस्त्रेणाभिहतोऽसुरः। दिव्यद्वन्द्वभये नेदुः न नृत्तुश्चापसरो गणः अवाकिरन् पुष्पवर्षैः रामं त्रिदिवौकसः। जयेत्युक्तं तदा सर्वैः वानरैः सर्वतो दिशम्। तदा प्रभृति श्रीरामः पूर्णिमायां दिवानिशं यात्रा करोति विधिवत् स सीतां सानुजः हरिः। मन्दोदर्यार्थ चाष्टम्यां नवम्यां वा विभीषणः हनुमांस्तु सदैवात्र वर्तते द्वारपोबली। पर्वस्वेतेषु सम्पूज्य जनैः सर्वार्थसिद्धये इत्येतत् कथितं देवी राज्ञः प्रादुर्भावं शिवे। यस्य श्रवणमात्रेण जायन्ते सर्वसिद्धयः इति श्रीभृङ्गीशसंहितायां श्रीभैरवभैरवी संवादे महारागी प्रादुर्भावो नाम द्वितीयः। Sri Bhairava replies, O daughter of the mountains, I shall enlighten you all about what you would like to know. Mere listening to it
every sort of prowess is bestowed on the voter. Ravana, the demon, was the son of Pulatsya, the direct descendant of Brahma. Out of compassion for him, Mahadev, having seen the demon weak, asked Pulatsya about the cause of it. The sage Pulatsya answered, "O omnipotent Lord, he wants to appropriate Lanka." The ox-driven Lord Shiva, with a smile, told the sage, "O firstborn, listen attentively. This child, your progeny, will undoubtedly bring disaster to the worlds. Hence, having been granted a boon by Brahma, he will rule over Lanka uninterruptedly." Ravana, the tormentor of the worlds, on hearing these words, smiled, bowing down his body out of reverence, asked the great Lord, who harbors affection for those who seek his refuge, "Who is that Brahma, the author of this world, whom you have mentioned just now? You alone are all-pervading soul of the universe. O God of gods, the great Lord, if you condescend to do me a favor, then, O you, the architect of this creation, grant Lanka to me for my residential purpose, proffering to me immense comfort, so that I become invincible. You will presently be restored to your 10-headed body as you had earlier. You will always find favor with the demons, O Ravana of irrefutable intellect. If you wish to preserve your life unscathed, leave Sita here and bolt off to your habitat. Otherwise, I shall offer you as a sacrifice in accordance with the prescribed ritual." That lotus-eyed Sri Rama, meditating upon the feet of Sri Shyama, replied, "O deprived one of vile conduct, why should I return to my residence? I shall inevitably rescue Sita. In the wake of accepting the tutelage of Sri Shyama, I shall bring death to you and will transfer sovereignty of Lanka to your brother Vibhishana, who is a very well-disposed devotee of mine." At that very moment, the blessed goddess Shyama, with wrathful copper-red eyes, smiled a bit and addressed Ravana in the words sounding like fragrant black clouds. Goddess who provides sustenance to the whole creation said, "Fire upon you, a degraded demon as you are. I shall, for the sake of you, and proceed to my choicest haunt in the splendid Himalayas, known as Kashmir, the Sati Sara, observing vegetarian vow." Thereafter, Sri Rama in human form exhorted Hanumana, "O Hanuman, the bravest of all, take charge of the almighty goddess Sri Shyama and proceed with ever nimble gait towards Kashmir. This feet of yours will plow back immense virtue to you. Let it be so." Having said this, Hanumana planted the feet of Sri Shyama on his back and arrived in the northern region. Sri Rama, proceeding towards the metropolis where the rendezvous for him had been fixed for giving a fight to Ravana, said to his brave brother Lakshmana, "He shall be dead by tomorrow. Laying our hands on Sita, we shall repair to our ever hospitable Ayodhya." Then in morning, Ravana felt distracted on account of fear. On reaching the battlefield, he addressed Sri Rama in these measured and slow words, "O superwizard Rama, renounce your ego and also banish Sita. Forsooth, repair to that asylum where your life will be saved." On second thoughts, Ravana added, "No, never, you cannot escape from here without measuring arms with me. If you possess chivalry of any mentionable magnitude, then let us engage ourselves in a duel." Sri Rama told Ravana with extreme confidence, "That's all right. Do not take to fight from this battlefield, but come on, let us challenge each other." When it was midday on the 9th day of bright half of Asuj, Ravana's courage
ebbed away for fear of Sri Rama. The demon struck by Sri Rama with his weapons lost his life. Celestial symphony was heralded, and the divine damsels began to dance with jubilation. The gods showered flowers on Sri Rama, and the whole host of Vanaras from all quarters gave a full-throated cry, "Long live Sri Rama!" From that day onwards, on every 15th day of bright fortnight of Asuj, Sri Rama in the company of Sita undertakes a pilgrimage to Kheer Bhavani in accordance with the prescribed ritual. On the 8th and 9th day of the bright half of the month of Asuj, Mandodari and Bibhishana visit this shrine respectively. The mighty Hanuman stands guard there for all the time to come. On these auspicious days, the people should propitiate the Devi for all-round success. O auspicious Bhairavi, I have in this way unfolded to you as to how Goddess Ragini appeared in cosmic form. By mere listening to this account, proficiency of every denomination is achieved. Thus, the second canto of the appearance of Maharagni from Brigdish Samhita ends. Bijakshar Mantra. Om Hring Shring Rang Kling Sau Bhagavate Ragyai Hring Swaha. Om Hring Shring Rang Kling Sau Bhagavate Ragyai Hring Swaha. Om Hring Shring Rang Kling Sau Bhagavate Ragyai Hring Swaha. Ragna Stuti, the worship, and a few Leelas in Kashmiri. Ragna Stuti, the Beike Kashmiri Leelai. Yado Dashark Parimandit Murti Reka Simhasanasthiti Mati Murgaye Vritamcha Devi Manakshagati Ishvaratam Prapannam Tam Naumi Bhargavapushim Paramarthragi. Udyadivakar sahasruchim trinetram Simasanoupari gatam urgopavitam Kagambujarya kalasham amritapatrahastam Ragim bhajami vikasadadhanarvindam Yatpad pankajadale amaramurdhamaulinyastendra Neelamani santatayah patanti Kinjalka panrata mugdha madhvatastam Ragi sada bhagavati janani vano avyat Shitam shubalat krishan netram Chaturbhujamena tvadasanastham Shankhabja shudsidharam maheshim Ragi bhajeham tuhinabja rupam Devi prasidnat saukhykare mridani Rudrani rogaharne chature prasida Sharvani sarvajan papa hare prasida Ragi prasida gunagauri shive prasida Smrtvaevantargatam pusam haranti sakalam malam Jayatyesha maharagi bhaktanam kamadayini Trijaganmohini ide mihiri bhut sadgune Namostu te maharagi pahi mam sharnagatam Sheshashesha mukhaganya gune gunaganpriye Namostu te maharagi pahi mam sharnagatam Surasur narsiddha vandaniya padambuje Namostu te maharagi pahi mam sharnagatam
चराचर जगत सृष्टि सिद्धि संहारकारिणी नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् चराचर जगत सृष्टि सिद्धि संहारकारिणी नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् भक्त कल्पलते अनल्प बाहि माधुर्यजितामृते नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् ब्रह्मा विष्णु महेशान वन्दिते गिरिनन्दिने नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् भक्तानां भीम संसार पारावार प्रतारिणि नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् निर्गुणे निष्क्रिये नित्ये सच्चिदानन्दरूपिणि नमोस्तुते ते महारागी पाहि मां शरणागतम् रागी स्तोत्रम् इदं पुण्यम् त्रिसन्ध्यम् प्रयतः पठे असंशयम् अशेषेण वशेदखिलम् देवी कास्तम गम बुला गई बाव कोसम देवी कास्तम गम बुला गई बाव कोसम तितम दर्शन चलम गम बुला गई बाव कोसम तितम दर्शन चलम गम बुला गई बाव कोसम देवी कास्तम गम बुला गई बाव कोसम बमावो तुझसे निशाम करमन पाठ पूजा बमावो तुझसे निशाम करमन पाठ पूजा तवई शर्मिंदगी में छम बुला गई बाव कोसम तवई शर्मिंदगी में छम बुला गई बाव कोसम देवी कास्तम गम बुला गई बाव कोसम देवी क्या जरूठ खटित कथ जाय बीठ देवी क्या जरूठ खटित कथ जाय बीठ दितम दर्शन चलम गम बुला गई बाव कोसम दितम दर्शन चलम गम बुला गई बाव कोसम देवी कास्तम गम बुला गई बाव कोसम गोडन सद कर में वानी दोयुम दिम परजानी गोडन सद कर में वानी दोयुम दिम परजानी त्रयुम त्रैलुकी मनसम बुला गई बाव कोसम त्रयुम त्रैलुकी मनसम बुला गई बाव कोसम देवी कास्तम गम बुला गई बाव कोसम कुरुत चोन्वीदन अन छुपूचम परमानन कुरुत चोन्वीदन अन छुपूचम परमानन शयुम शिव रूप वास्तम बुला गई बाव कोसम शयुम शिव रूप वास्तम बुला गई बाव कोसम देवी कास्तम गम बुला गई बाव कोसम सत्यम वास्तव में सतरूप चलम अज्ञानोकूफ सत्यम वास्तव में सतरूप चलम अज्ञानोकूफ सदीशित दूर चलियम बुला गई बाव कोसम सदीशित दूर चलियम बुला गई बाव कोसम देवी कास्तम गम बुला गई बाव कोसम
नथर चान पदम वथर कलस पेट मोखत छतर नथर चान पदम वथर कलस पेट मोखत छतर तथ नरवानुक थम बलागय बाव कोसम तथ नरवानुक थम बलागय बाव कोसम सिदीवी कास्तम गम बलागय बाव कोसम अशट बाजाच मित बुड़ बोग सोज हक अष्ट बाजाच मित बुड़ बोग सोज हक से दीवी क्या गछि कम बलागय बाव कोसम से दीवी क्या गछि कम बलागय बाव कोसम से दीवी कास्तम गम बलागय बाव कोसम नचान छी चंद तैमन तिमन दिक्च पानै डन नचान छी चंद तैमन तिमन दिक्च पानै डन त्यठै त्राउख नरलम बलागय बाव कोसम त्यठै त्राउख नरलम बलागय बाव कोसम सदीवी कास्तम गम बलागय बाव कोसम छक शक तिशवस छियस अग्न संदर जूत छक शक तिशवस छियस अग्नस अंदर जूत तमुक मंत्र छु शमदम बलागय बाव कोसम तमुक मंत्र छु शमदम बलागय बाव कोसम सदीवी कास्तम गम बलागय बाव कोसम त्रेगोनसे निशजाम त्रकारन तिम बनेम त्रेगोनसे निशजाम त्रकारन तिम बनेम तमुक मिल सार गौ पुम बलागय बाव कोसम तमुक मिल सार गौ पुम बलागय बाव कोसम सदीवी कास्तम गम बलागय बाव कोसम सदीवी छकदयावान छि बोलान विष्णु राजदान सदीवी छक दयावान छि बोलान विष्णु राजदान मे अर्तिस आचन छम बलागय बाव कोसम मे अर्तिस आचन छम बलागय बाव कोसम सदीवी कास्तम गम बलागय बाव कोसम दितम दर्शन चलम गम बलागय बाव कोसम सदीवी कास्तम गम बलागय बाव कोसम 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 छम
सजई अलम जान लच बजई किछ लच के हिच थजई स्वर्ग बोने अंधी अंधी राज रे निरान ब्रहरी लगई पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी लगई है पादन भपरी राज रे निरान ब्रहरी
तित गट चलिया प्राण फश